Okay. So Chauhan sir, yeah, how we should start? Like every time we start with the prayer, no? हाँ आएंगे संजय जी ना. जी जी जी. आपका हाथ कैसा सर अभी? ठीक है सर, अभी तो तकलीफ है ही है. इसमें क्या रॉड बोर्ड डाला है क्या कुछ? वो प्लेट डाले हैं, प्लेट. ओके, प्लेट डाला है. ओके ओके. डाले मतलब? परसों खोलेगा, देखें क्या होता है. तो अच्छा होगा सर. जी जी जी. तो अच्छा होगा. क्या हुआ था वैसे? And ये also, छोटा सा Chauhan चोट ji लग helped गया. a lot of people to bring their dreams into physical photos. Because of Chauhan sir only I made this vision board. Thank you, sir. Great, In great, this situation, great. it's really amazing. Thank you so much to see my dreams in with physical. I'm so happy. Thank you so much. I am happy, Karpagamji, because you, the person, said how I am going to do the language, some challenges there. But today you came with the presenter, number one presenter, and did also very well presentation. Thank you, Hema. Hope you Thank you wish so much. all wish you come true. I'm seeing as though I'm putting tick mark as one by one coming. I Yes. visualize. Thank you so much. Yes. This is a team effort. चलिए सर स्टार्ट कीजिए. हेमा जी आपको होस्ट बना रहा हूँ मैं. सर, कैप्टन संजय सर आ गए? आएंगे अभी. Wait for और some time, sir. कमांडर विजय सर भी आ रहे हैं? आना चाहिए सर, सभी आते हैं. जी जी जी. बिकॉज इस 26 जनवरी स्पेशल, तो अपने जो वॉरियर्स हैं, कैप्टन सर, विजय सर, स्पेशल ओकेजन फॉर देम. आ रहे हैं सब लोग आ रहे हैं. जी जी सर, जी सर, जी सर. सर गुड इवनिंग. आइए राम सिंह जी. गुड इवनिंग. Good evening. जय हो जय हो. Everybody, वेलकम. वेलकम कमांडर विजय सर. thank you so much. You're all right now? सर गुड इवनिंग. आई एम बेटर नाउ. Yeah. सर गुड इवनिंग. थोड़ा सा था ये Good evening. Yeah. After effects रहेगा थोड़ा. या थोड़ा कंजेशन रहता है, Fever लेकिन ठीक. का after effects will be there ना. ठीक है, आप गाना गाएंगे तो ठीक हो जाएगा वो. हाँ, ऑफ हो कोर्स. जाएगा. गाना इज द बेस्ट रेमेडी सर. यस सर. चाहे वो सुनना हो चाहे गाना हो, इवन टू लिसन दिस म्यूजिक ना, इट्स अ गुड रेमेडी. मेनी थिंग्स. या ठीक है, आपको याद मिलेगा ना सर. आप गाना गाएंगे तो आप ज्यादा एनर्जी लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे. ಈ ಮಾತಾಡೋಣ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what I think, वैसे usually we start the RYSB sessions with the national anthem, no? So today we will start with the national song, Vande Mataram. So I'm going to sing a song, Vande Mataram, in the beginning. So what is the protocol, Vijay sir, Commander Vijay sir? इसमें भी आपको खड़ा होना पड़ता है, इसमें भी वंदे मातरम में? Yes. नहीं. नहीं. वंदे मातरम में नहीं होता. अच्छा. ओनली नेशनल एंथम. Only national anthem. All right, national sir. song पे नहीं. एक्सक्लूसिव है नेशनल. Okay sir. So Chauhan sir, whenever you say, we'll start sir. नहीं स्टार्ट की रही है ना आप, क्या दिक्कत है? आ गए Send हो गया. Send 5 हो गया. Prayer start है ना. हेमा जी यू आर होस्ट नाउ. कार्तिक सर नॉट देयर. कहाँ आप मुझे नहीं कार्तिक सर किए. नॉट देयर. हो गया. नहीं I'm किया. here. चलो शुरू कीजिए. Good. Will we start with the prayer? Yeah, please. Good Cloud evening, में record guys. करो sir. Welcome to this edition of. नहीं जरूरत नहीं, यूट्यूब लाइव है ना. हाँ. Okay, so welcome to this edition of 26th January special, Republic Day special alumni meet. Sir, And on behalf of, sorry to interrupt. Sir, record कीजिए because कुछ we may be playing some videos. वो YouTube में बाद में this may get copyright issue. It's better to do that. Cloud में कर दो. हाँ कर दीजिए. leave it. I'll request everybody to mute himself, please. So welcome all to this very special edition of alumni meet on the occasion of Republic Day. It's coincidence that today's fourth Wednesday and today's Republic Day as well. So this is our theme today. So I'm going to start with the Vande Mataram. Then there will be surprise entry in the group. Shall I start?
Yes. Thank you. Just a second, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shyamulam, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Shubha Jyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Shubhadala Shobhini Shubhasini Pullakusumita Shubhadala Shobhini Shubhasini Sumadhura Bhashini Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Sukhadam Varadam Mataram Vande Mataram Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Shasya Shyamulam Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Thank you. Thank you so much for that mesmerizing song, Vasudev ji. भली आवाज में आपने Amazing. Amazing. Beautiful. Beautiful. तो अभी हमारे जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं आपको बताना होगा कि 26 जनवरी को छुट्टी क्यों होती है? एनीबडी कैन टेल मी? Come on, unmute yourself and tell me why is holiday on 26th January? हॉलीडे नहीं है, गणतंत्र दिवस हॉलीडे नहीं है ना, सरकारी हॉलीडे. हाँ, why it is holiday on 26th? रिपब्लिक डे. Anything else? Any guesses? हमारा Sir, दिवस please है. repeat the question. Repeat the question, sir, please. The question is why it is holiday on 26th of Jan? Because the Because what? constitution of a country was laid on that day. So we celebrated. The constitution of a country was laid on that day. हमारा दिवस है सर. हमारा दिवस है.
हमारा, we can say our day. Yeah, Not yeah, exactly. उसके अलावा इसके अलावा भी कुछ है, yes. Can I say? उसके अलावा कुछ नहीं, you are दिन भर host, के you are host, you are not allowed. अरे बाबा, RYB के लिए स्पेशल डे because one of the shining stars of RYB डॉक्टर सागरिका का बर्थडे है आज, तो हॉलीडे तो होगा ना. अरे वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट. हम लोग भूल ही गए थे, मेरी बात हुई थी. करेक्ट करेक्ट. डॉक्टर Happy birthday, सागरिका की Sagarika हॉलीडे ji. है, बर्थडे है. I think there she is. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thank you. Looking Going like to rock today. an angel, looking very nice. Going to rock today. In fact, there is party on her at her home, so she requested me to put her on the first. So she's going to recite a poem. So before that, our member Jyoti Jatia ji wants to say something about her birthday. Jyoti ji, are you there? Yes, yes. Please, So go ahead. this is a very small birthday song. So I'll explain it first and just 4 lines. And then I will sing one line and you can sing the second line with me. Okay, so, great. So the first line says, Sagarika. Yeah. Sagarika, are you there? Who has to sing second line? Sagarika ji? Yeah, so the first line says, I will explain the meaning first. It says, Sagar mein ek lehar uthi tere naam ki. Means from the vast consciousness of God, you arose out into the body of Sagarika like a wave. So the God's consciousness arose like a wave into your body. Tujhe Mubarak khushiyan Atma Gyan ki. That we wish that you get the enlightenment of the soul, the self-realization. तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना. Means ultimately, however many rebirths you may take, but you ultimately one day you're going to go and merge into God. तू है सुंदर बूंद इस चेतना की. Means you are the beautiful drop of the vast consciousness of the God. So you are the beautiful drop from that. So this is what it is. So I'll sing one line. You can sing the second line with me. Okay? Sagarika ji, you have to sing with her. Oh, me, all of you sing. Okay, we will sing. Okay. It's my fault. I'm going to hear. I'll listen to all of you. All right. All right. Okay. I will say, तू है सुंदर बूंद इस चेतना की. You say, मैं हूँ सुंदर बूंद एक चेतना की. You sing. Okay, fine. Sure. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की. सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की. तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की. तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की. तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना. तुझको है अनंत में जाकर मिलना. सुंदर इस चेतना की. मैडम, आपकी आवाज वेव्स जैसे हो रहा है. मैं हूँ. हाँ. इस चेतना की. तू है सुंदर बूंद इस चेतना की. मैं हूँ सुंदर बूंद इस चेतना की. Yes. Very nice. So you are looking awesome, Sagarika ji. Thank you, Ji. Thank you very much. Before I recite the poem, I really see RYP has been a family to me. It's been during COVID that all of us have been really homebound, but due to RYP family, all of us have survived this COVID very well. So I would really like to share my birthday with all of you and cut the birthday cake with all of you. Would you permit me to do that? Sure. Wow. बस केक हमको भेज देना भाई कोरियर. सागरिका मैम आ जाना चाहिए केक इधर भी. Yes. Oh wow, what a lovely cake. Lovely cake. So here it is for all of you all, and let me cut it for all of you all, and then virtual cake. Okay. Done? Yeah. Fine. Cake. Yes, it's a lovely cake. Yeah. Put it in the chat box after that. In the chat box. Let's sing. Happy birthday to you. I'm playing a song. Okay, sir. Play a song. कैसा है मैम केक? कैसा है? अच्छा है ना?
Delicious. On behalf of all of you all, the cake is here in my mouth. Yeah. Enjoy. Done. Awesome. Thank you very Super. much. Thank you so much. Karthik sir is going to play a song for you. Yeah. So I played in the And morning then your again, poem. once again. Yeah, just Yes, a sir. minute. Sure. So we'll play it in Sanskrit today. Okay. Because completely natural. And here we go. Hi, we've all sung and heard the happy birthday song in English, and honestly, I'm quite bored of it. What about you? How about we listen to the happy birthday song in another language? And what better than the mother of all languages, Sanskrit? So, Anirudh and I are going to perform this for you. It is a beautiful tune and it has a great meaning as well. So, we'll perform it first, and if you like it, you can stay on for a tutorial. Janmadinamidam ai priya sakhe, Janmadinamidam ai priya sakhe, Shantanotu te sarvadamudam, Shantanotu te sarvadamudam, Prarthayamahe bhavashatayushi, Prarthayamahe bhavashatayushi, Ishvara sada त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय, जीवनं तव भवतु सार्थकं, जीवनं तव भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकं, भवतु सार्थकम्. Okay, that was birthday song. You're on mute. Very nice. Very nice. So please go ahead with the poem, Sagarika ji. Yeah. Dr. Sagarika, you're on mute. Please unmute yourself. Yeah. Thank you very much, Karthik ji. Thank you very much, RYB family. Love you all. And I'm really blessed to be amongst all of you all. The community RYB rocks. Well, always, I try and pick up some things from here and there. So today being 26 January, there's a very beautiful poem written by Rabindranath Tagore. The Nobel laureate Rabindranath Tagore, who says that fear, if you go ahead in your life with fear, you really can't move ahead. And what he would like to see in how he would like to see India growing, let us see it through his poem. So here it goes. The poem is Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way. Please pay attention. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. Where the clear stream of reason has not lost its way into their dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward by thee, into ever widening thoughts and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. So this was a very, very famous poem of Rabindranath Tagore. And being 26 January, this is what he would like to see. So let's all follow his path of holding our head high. Where if our head are on the shoulders, our feet need to be ground. We need to be humble all the time, however high we grow. Though we are growing light, so the feet has to be on the ground and the head has to be on the shoulder. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you very much, Sagarika ji, for your participation and for such a nice poem. Despite being busy with friends and your birthday, you participated. So we appreciate a lot. Thank you very much. Once again, wish you a very, very happy birthday. Stay blessed and you always rock. Thank you so much. Thank you so much, everybody. Yes, thank you. Thank you very much. So, Captain Sanjay sir, welcome.
आज की मैं कहना चाहूंगा स्पेशली कैप्टन संजय सर, कमांडर विजय सर और हमारे एक और आर्म्ड फोर्सेस के रिटायर्ड पर्सनल पुलिस से राम सिंह जी, आप तीनों को सल्यूट है सर। ये दिन आपका है सर, और आप लोगों की वजह से, आप जैसे कई लोगों की वजह से हम लोग आज इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में खुली सांस ले रहे हैं। तो वी सैल्यूट यू सर, ऑल थ्री ऑफ यू सर। और भी अगर आर्मी ग्रुप में और भी कोई अगर आर्म फोर्सेस से अगर हो और मुझे ध्यान नहीं हो तो मैं माफी चाहूंगा। सबको सलाम है सर, सबको सैल्यूट है। थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक बिकॉज यू। ऑफ यू वी आर सेफ एंड वी आर हियर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो एक मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। जब आंख खुले, तमन्ना बता रहा हूं अपनी। कवि बोलता है आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन जब मरे तो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये है हमारे हिंदुस्तान की खासियत। हमारे कहते हैं सारे जहां से अच्छा हमारे हिंदुस्तान कोई कुछ नहीं सर। तो लेट्स गो अहेड। वो जो कैप्टन सर वो प्रेयर वाला पोर्शन रह गया था। नहीं, I'll do it if you want. Please sir, please go ahead sir. I actually forgot to include my name in the list. Somehow it skipped me because I was a. No, we always start the session with your prayer, sir. Yeah, let us pray. Please, sir. Let us close our eyes and let us surrender this session and all our lives and all our families to the Almighty God, to the Creator, to the universe, for the blessings and the protection. And we thank God also for bringing us all together here as one family into this community of RYB, and with a lot of gratitude towards the stalwarts, Infinity Karthik ji, HK Chauhan ji, for whose health we pray for in a very special way, Commander Vijay Kumar ji. Thank you so much for your guidance, and thank you so much for your instructions, your direction that you have given to build this community of Rewire Your Brain. And as we go ahead, we pray for protection for our own family members and all our nears and dears from any sickness, from any disease, from any negative mindset, from any kind of health issues, from any kind of anxieties, tensions, and worries that may come, to get rid of any fears that may be upon us and fill us with faith, hope, and love. Let us go forth with the attitude of gratitude, and also pray that we may always be giving more than receiving, so that our cup will always be full and overflowing at all times. We pray that our unity, that our bonding always remains very strong, that all of us may always have smiles on our face, readiness to help one another in a very special way, going out of the way as it has always been visible in our community. I really thank God for bringing us together. In a very, very special way, I would like to pray for Chauhanji's good health, that he may come out of his physical trauma that he is in currently. His wounds may be healed, his stitches may be removed safely on the 28th, that is the day after tomorrow, and all his fever or cough, cold, any symptoms that he's having may not result in anything severe, but be healed, so that he can be with us and guide us at every step. I pray for all the performers in this session, that they may be illumined with the light from God, and their performances may be enhanced so as to inspire all of us. I thank you, I praise you, Almighty, and I thank you, my brothers and sisters. God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So now I will say, tell Neha ji to continue for the next participant, please. Well, I know you all are excited. So are we. So Sagarika ji, we are celebrating your birthday. We are also celebrating Republic Day, isn't it? Yeah, it's Republic Day. But do you all know the story? Actually, when Vasudev sir asked, why do we have a holiday on 26th Jan, I was actually thinking that what is the exact reason? And I raised my hand to tell you the reason. But now I guess I should ask everyone. Why do you think we have a story, or what is it that
we celebrate Republic Day for? Why? Kyun? Anyone? Come on. यार ऐसा नहीं हो सकता सारे इंडियंस को नहीं पता, ठीक है? ఎవరొకరికి తెలుస్తుంది. Anyone, please. Okay. Dear Shetty garu, మీకు తెలుసా? Okay, come on. Let's start. Shetty garu, yes. Please unmute. Your question is very interesting, but you should not see today as a holiday, first of all. Okay, forget about the holiday. Next. Yeah, it is remembering the great work. Generally, you see, any birthday, why you remember that day? Marriage day, something like that. So for India, it is something like a festival day, where one is independence and this is a constitution day. So you actually, strictly speaking, you should not take today is a holiday. It is a remembering day about our freedom fighters who lost their lives, struggled, and today we are enjoying like this. Means it is because of their blessings and their hard work only. Otherwise, today we are not at all like this. So it is a day of our culture and day of our remembering our freedom fighters. Okay, so that is what my opinion. Thank you, dear Shetty garu. And yes, I had Apurva also raise hand. So Apurva ji, are you there? Yes. Yes. Please switch on your videos. Yes, thank you. And yes, you tell me, why do we celebrate Republic Day? So India is very big country and our constitution is very big. It is written in the day is finalized, okay? 26 January 1950, I guess, is the day when our constitution finalized. Let me ask you all something. Do you all know that the constitution was written 7 days before 26 Jan? Yes. That's the truth. It was written 7 days before 26 Jan. Then why do we celebrate Republic Day on 26 Jan? Anyone? See, we got to know this, okay? We got to know this, yeah. Actually, it was approved on the constitution was written 3 years before 1950, but actually it is accepted or approved on 1950. It is officially accepted. Okay. Now, 26 Jan is always celebrated as Republic Day to come on, it's just to go ahead and tell you that, yes, this was India's constitution. It came into effect on this day. Now, there is another political history that holds significance to this day, and that is this date, 1947. May you remember that 15th August we had the independence of India, right? Now, on this 26th November 1949 was the day on which the Constitution of India was adopted by the Indian Constituent Assembly, and on 26th January 1950 was the date when it came into force. But the reason why it is celebrated on this 26th Jan is because that is the day when we achieved Purna Swaraj status and British finally left our subcontinent. The first Indian flag was hosted on 26 January, and that is why we have celebrated or selected this date for celebrating our Republic Day. Yes, so now you all are going to remember this. So now that I told you a good story, don't you think we should enjoy another story? Yes? Yes? No? Yes, okay. So I have Karpagam story. So I would request people to please come in. Karpagam. Karpagam has already left the session because she wanted to join some other session. Okay. Then we have another story which is actually, sung not by the mouth, but instead by hands. Can you guess what is it? Yes, there's somebody who's going to explain a beautiful story by the keyboard. So can I now invite Pradumna on the keyboard, please? Pradumna is here. Pradumna, yeah, okay. I see Suma, I guess that's the one. Yes, wonderful. Okay, so are you ready? Okay, one second. Unmute yourself, please. Yeah, great. Yeah. Are you ready? Yes. All right, great. So let's start. What are we waiting for?
Hello everyone. So the song I'm going to play is Vande Mataram. So it praises our nation, which is India, and it is written and composed by Sri Bankim Chandra Chatterjee, and it's in the Ragam, Desh Ragam, and Talam is Adi Talam. Wonderful, amazing. Very nice, very nice, very nice, Thanks. very nice. He was playing so well that even my son came in to see who was playing. So Yeah, good. very nice, Pradyumna. Thank you. छोटे पैकेट में बड़ा धमाका. Always he is participating since last 3 sessions. He's continuously participating all the way from Singapore. In fact, in Singapore it is now 10 o'clock in the evening. So tomorrow morning he has to get ready for the school. That's why we put him first. And his mother also, Miss Suma, Miss Soma is going to sing a patriotic song now. Soma Kargal. She is the cousin of our member Deepthi Kargal ji. So welcome Soma ji. Please, are you Thank there? you. Yes, yes. Please, she's going to sing a patriotic song. Please go ahead. Okay. So I'm going to sing a Punjabi patriotic song, which I learned long back during my school days. डोलिया वे डोलिया ओ मेरे बेलिया डोलिया वे डोलिया ओ मेरे बेलिया एक डगा डोलत लांदा जा मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा हो एक डगा डोलत लांदा जा मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा कह में कौन देश मेरे दिया कोहना दा मोतो जा कह सूरज नो साड़े धरती किरणा दीरत जो जा कह में कौन देश मेरे दिया कोहना दा मोतो जा कह सूरज नो साड़े धरती किरणा दीरत जो जा कह सावण नो नगरी नगरी सुख दामी वर सांदा जा तू गांदा जा हो
डोलिया वे डोलिया, ओ मेरी बेलिया डोलिया वे डोलिया, ओ मेरी बेलिया एक डगा डोलत लांदा जा, मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा। ओ एक डगा डोलत लांदा जा, मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा, मेरा सुतड़ा देश जगांदा जा। जागो जागो जागे मिट्टी जागन फसला, जागे मिट्टी जागन फसला, जागो जागो। Thank you. Wonderful, 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 Suma. Despite being from southern part of India, your Punjabi singing is amazing, amazing. Really, your pronunciation is so clear and accent was very, very perfect. Yes, Nehal. Yes. I wanted to ask you something, Vasudevji. Do Yeah. you know why do we call cell phone a cell phone? Cell phone. हाँ, cell phone को cell phone क्यों बोलते हैं? It's a trivia. You tell us. Anybody? Karthik sir se पूछिए. He has the answer for everything. Everything. अच्छा, I'll tell you. Okay. I finally realized that people are prisoners of their own phones, and that is why it is called a cell. C-E-L-L, cell phone. That is true. Very well. Absolutely. So like this, I cracked a joke and there's somebody else coming right now to crack another joke, and that is our dear Jyoti ji. So Jyoti ji, are you ready? Yes. Can I share? Wonderful. Can I share screen? Yes, yes, please. Is she co-host? I'm checking. No, she's not yet a co-host. Okay, but she can. No, she's sharing. She's sharing. I will make, madam, 1 minute. Yeah, she's She sharing. can share. She can share. That's okay. I know this joke. I know this joke. सफेद वाली क्या खाती है सब? कौन सी? काली वाली सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। रखते हैं लोग। उसी मड़े में रखते हैं। I think the volume went, right? Volume not. I'll just start again. काली वाली सफेद वाली क्या खाती है सब? कौन सी? काली वाली सफेद वाली? काली वाली को बता दीजिए। घास खाती है। सफेद वाली क्या खाती है? वो भी घास ही खाती है। कहाँ रखते हैं लोग? काली वाली की सफेद वाली? अरे भाई सफेद वाली बता दीजिए। उधर बाहर मड़ई है उसी में रखते हैं। और काली वाली कहाँ रखते हैं? उसी मड़ई में रखते हैं। अच्छा इनको नहलाते हैं? किससे नहलाते हैं? कौन से? काले वाली को भी सफेद वाली को? काली वाली को बता दीजिए। पानी से। और सफेद वाली किससे नहलाते हैं? उसको भी पानी से नहलाते हैं। अरे जब दोनों को एक क्या करता है? जब काली वाली सफेद वाली क्यों कर रखा है? दोनों एक ही साथ सब कुछ करते हैं। वाली हमारी है, सफेद वाली वो भी हमारी है। That was wonderful. Omicron and COVID का difference. Very funny, Jyoti ji. Very nice. Okay, there is a second part to it also. Yes, please tell Dr. Vijay sir. The second part is the guys get beaten up, na? Then he says, "You people from the press, when something goes wrong, then you people keep asking, how do you feel about it? Why don't you feel happy about it? Why don't you feel unhappy about it?" तो हम लोग तंग आ चुके तुम लोगों ने क्वेश्चन से, इसलिए तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा आंसर दिया। पकड़े हैं। Very nice. So very true is the second part. True story. Very hilarious. वो एक्चुअली उसका सेकंड पार्ट था, वो जोक आया था पहले। Very hilarious. अभी एक जोक मेरे को भी याद आ रहा है, कोविड पे ही है वो। अभी गानों पे चल रही थी बात कि कोविड से पहले जो गाने थे उनको और अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो कैसे चेंज हो गया सीन। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ सॉन्ग, लग जा गले के फिर ये
हंसी रात हो न हो। That's my आज favorite बोलेंगे song. आज बोलेंगे दूर रह कर, नहीं आज बोलेंगे मैं तो चला जिधर चले रास्ता। फिर लेडी बोली पहले बोलती थी चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, फिर तेरी दुनिया से होके मजबूर चला। तो आज की तारीख में वो जो पुराने गाने थे उनका कोई रेलेवेंस नहीं, अभी तो ये है कि मेक डिस्टेंस एंड बी हैप्पी। चलिए Absolutely. इन जोक और से अब बढ़ते हैं आगे, जोक से जी बढ़ते हैं आगे। और नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर Veera Brahmam sir. He is going to tell us a story about diabetes. It's a story or I don't know. It's a talk. I don't know. But blood he pressure is से just going diabetes हो style. गया. So we will enjoy. BP, We will BP. enjoy his story or talk whatever it is about Blood pressure से. ब्लड प्रेशर पे। लेकिन मैं ब्रह्मम सर को हैंड ओवर करूं उससे पहले एक जोक सुना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर क्या होता है ये उस लड़के से पूछो जो अपना अनलॉक फोन घर पे भूल के आया है, उसको पूछो ब्लड प्रेशर क्या होता है। उसका फोन अनलॉक है लेकिन घर पे बीवी के पास में है। एनीवेज नमन सर प्लीज गो अहेड। One Friday evening, after office work, I I was walking happily to home, thinking about the beautiful weekend vacation. Suddenly, one judge jumped upon me. I was aghast. What happens to my BP then? Honorable mentors, respected coaches, and my dear friends, this is Blissful Brahma, RYB third batch, and presently part of RYB advanced team now. Welcome all to my story about blood pressure. Our body consists of trillions of cells and blood vessels. Let us consider blood as a train and body parts, organs as railway stations. The train goes into every railway station and comes out. At every station, some passengers board into the train and some people get out. Similarly, let us see about the blood. Blood, where is it produced? In the bone marrows. Where it starts from? It starts from the heart and goes into each and every organ. At each organ, blood stops, some items get in, some items go out of the blood. The organs which are responsible for cleaning the blood, what are those? Lungs, kidneys, liver, and the bone marrows. These four organs cleanse the blood actually. Then, when train is going right, when blood comes to the heart, the movement gets speeded up. That dub, 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 heart beats up, right? The heart creates the pressure called the blood pressure in the blood. Then why blood pressure is high or low? Imagine heart as a mother and the cells are children. Whenever that cell eat or some disease comes to cell, it sends the signal to the mother, heart, need food, I need to cure myself. Then heart immediately acts upon and increases the blood pressure or decreases the blood pressure based on the need. Whenever we run fast and some other thing, what happens? BP goes high. Whenever we do meditation, what happens? BP will be very low. Then someone will say, okay, but I was just watching TV at my residence and my BP is very high. What is the reason for that? Some people may say, I was not doing meditation, but I was cooking food at home, but had a low BP. What was the reason? Let us understand the reasons. Whenever the cell needs the food or cell get damaged, what happens? Message goes to the mother heart. Then immediately mother heart understands
blood food is required to the cell immediately, it starts pumping in. When more and more cells are getting disease or more cells are need hungry, immediately blood understands, make it faster, faster, faster. This way, heart will pump the more. That's called blood pressure actually. Okay. Now, whenever the cell gets disease, what we should do? We should not take the BP tablet. We should do one, blood pressure. Second one, good sugar. If you wanted to understand more about good sugar, watch my previous story about sugar and diabetic. Third one, oxygen. Fourth one is what? Vitamins and minerals to cure the disease. See, our body or cell does not understand idli, vada, dosa, papad. It understands carbohydrates, proteins, fiber, vitamins A, B, C, D, etc. Minerals like calcium, magnesium, chromium, selenium, sodium, etc. Okay? When these all the four things are given to the cell will cure itself from disease. After that, BP is normal. And the question to all, can BP be cured just by eating salt? We will discuss this in next session. Thank you, my dear friends, for the opportunity. Thank you very much. बीपी के बारे में बात चल रही थी, तो एक क्वेश्चनर था, बीपी से रिलेटेड नहीं है, it's not related to BP, but it was question to the children or to the adults, I'm better, that how much time an animal takes to open his eyes after the birth. So first she asked, what about cow? They say cows opens immediately, just after birth. Okay, what about goat? Goat after 2 hours. What about cat? After 6 hours. What about dog? After 10 hours. Then he said, what about a human? Everybody was quiet. So you guys tell me, anybody, any guesses? ज्योति जी नहीं बोलेंगे, उनको पता है. Anybody, how much time a human takes to open his eyes? अरे जो डिस्कस कर लिए हैं वासुदेव. हाँ जी. आंसर डिस्कस हो गया है. नहीं ये कौन बोल रहे हैं, कौन किसने जवाब दिया? आई डोंट नो. शादी के बाद राम सिंह. अरे राम सिंह जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. शादी के बाद आके गलती आदमी की है. वेरी नाइस. वेरी गुड. इनफैक्ट शादी के नाम पे मुझे एक चीज और याद आ गई. जी. ओके, आई टोल्ड वन डे टू माय हस्बैंड, लुक एट दैट ड्रंक गाय. हस्बैंड बोलते हैं, हु इज ही? आई सेड 10 years back he proposed me and I rejected him. My husband replies, oh my god, he's still celebrating. about drinks, I would like to share something more. There were two guys. अभी आज जैसे 26 जनवरी है, तो आज ड्राई डे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, on particular days पे. So two guys went to have a drink in the bar yesterday only. Okay, so when they were coming out of the bar, one guy shouts, they were driving, one of them was driving, another shouts, hey, there's a bar, there's a bar, keep quiet. Or after that, bang. And next day, they open their eyes in the hospital. And that one guy says, stupid, I was telling you, there's a bar. And you were not listening. And that says, stupid, you are stupid. You were driving the car. So that happens after drinking, no? Anyways, so Nehaji, who is the next? Okay, is Ishita there? Because we need a song now. Anybody? Ishita? Okay, good. Ishita, okay, chalo, good. She's a very good singer. Last time she sang a jingle bell, no? Yes. Yes, Ishita. ये शुभ दिन है
वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लेबू, जब तक थी सांस लेबू, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन में धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवारें, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। Thank you. Wonderful, amazing. Super, super, Beautiful. Amazing. Super, super. Very, very beautiful, nice. beautiful, Very beautiful. well sung, Nishita. Very well sung. Fantastic. God bless you. You are blessed, doctor. You are blessed. Absolutely. And now we are going to be blessed because Dr. Neeraj is coming in to talk about total health. Yes. Yes, Dr. Saab, welcome. Thank He's you. from Jaipur and I'm from Jaipur too. So I would like to tell something about him. One day I was sitting with Dr. Neeraj at his home and he got a call from his from a lady patient. She told Dr. Saab, बहुत घबराई हुई थी वो, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने गलती से पैरासिटामोल खा ली है, अभी मैं क्या करूं? तो वो क्या करें? डॉक्टर साहब बोले, नहीं अब क्या करूं, उन्होंने बिना वजह बिना किसी वजह के पैरासिटामोल खा ली, क्या करूं? डॉक्टर साहब थोड़ा सोचे, बोले ऐसा करो उनको थोड़ा हेडेक दे दो, थोड़ा हेडेक दे दो उनको। बोलो वो किस लिए? व्हाई टू वेस्ट पैरासिटामोल? जस्ट ऑन लाइटर नोट, डॉक्टर साहब इस तरह के डॉक्टर नहीं है, लेकिन अभी आपके सामने देयर ही इज गोइंग टू प्रेजेंट सम टोटल हेल्थ प्रीमियर, समथिंग लाइक दैट, राइट डॉक्टर साहब? वेलकम सर. Good evening, all of you. All the best wishes for Republic Day. Just now, Brahman sir also told a very nice story on blood pressure. Na? It was very entertaining and also like educative or informative. So basically, I just want to give a small my opinion on the concept of total health. So just a primer, we can say just not much details, just briefly like. So whenever we mean health, we talk about health. So basically, I think there are few dimensions we discuss about. And the first and foremost dimension is the physical health. Everyone knows that physical health, our body performing in a certain way, that is the physical health. So any anomaly in that physiology will lead to a dysfunction.
So structuring and functionality at the basic level. That is the physical health. So, but beyond that, what are the more things? So one more level we know that we call as mental health. And we are very, very aware of it. Even the best of the fit persons, like very strong persons, they go into breakdown because their mental equilibrium is not there. They go into anxiety, they go into mania or depression or lose balance. So second component is the mental health. We are also aware of that. Now moving beyond that, what other things are more needed so that we grow an exuberant life, living a healthy life and living an exuberant life. Many times Karthik sir also uses these terms and in a way, now we are in a good physical shape, we are in a very good mental health. Now we look for other dimensions like the spiritual health. So spiritual health, what exactly means now? In a scientific way, we can see that spiritual health means we are seeing our life in a gross context. So going beyond the normal things and going beyond and seeing in a bigger vision, our life and our context or contribution to the society or the existence or the humanity. So there where the spiritualism comes into play. Then the social health is also a part of that. So how much contribution we are giving firstly to our family and then gradually extending from society to humanity. So that is one more dimension. So when all these things we are able to do in a proper coherent way, means all the dimensions striking in a good way, the physical, mental, spiritual, social. So then what happens? Then we are, and some time in our we experience this. It's an inner feeling we experience, no? And then we want to do something beyond that, beyond ourself, like some selfish contribution we want to do. So this is basically the concept of total health. So in the coming next further, I will tell more about that. But again, there are two things basically. One is the knowledge, and second is the living that knowledge in your life. So now knowledge is never a problem because now the knowledge is overflowing. So many Google, YouTube, many things. But how to live that knowledge in an effortless way? We try something, we do efforts, then we are not able to cope up, we leave that. So that knowledge coming effortlessly in our day-to-day life, how we can do that? So there are few things we'll be discussing further, but one thing is the meditation. So meditation is a different dimension. I'll not tell much about in very detail, but basically it's a type of our body is a factory of hormones. Body is a factory of hormone, and just like any equipment works on electricity or some fuel, our body works on nerves and hormones. So at that particular time, what is a hormonal flow in the body and how are the nerves functioning? That gives us the what we call the prana level, the energy level that decides. So the food, sleep, these are things, but how to get more energy? I think meditation is that answer. And again, what we say, that is a complete science in itself. Complete science in itself. Sometimes in the next talk we will discuss. So what I want to prime you that we don't have to be only healthy. We should be totally healthy, and life should be an exuberance. That thing I wanted to prime you, and maybe in next talk we'll discuss more on that. So that was from my side today. Thank you very much, Dr. Very, Thank you, Dr. Neeraj sir. very useful information, Dr. Sir. Very, very useful. So thank you, doctor. Fantastic. God bless you. ऐसे ही बात चल रही थी डॉक्टरों की, तो अभी ठीक है. On lighter note, I would like to tell you one more thing. There was a guy about 24, 25 years, young guy. He went to a doctor
and asked, Doctor Sahab, please prescribe me a drug to live longer life. Doctor said, prescribe you drug for a longer life? Okay, doctor was thinking. And then he asked, just tell me, are you married? He said, no. So you get married. Better you get married. You see, what is this connection between getting marriage and living long life? Doctor ne kaha, there will be two things. Once you get married, your this desire to live long will automatically vanish. First thing. And even though if you want to live more, every moment of the life you will think, oh, life is so long, so long, so long. Anyways, it's not masculine, like not against all the women. Men are also like that, no? So, okay, can I complete the joke? Women also make the joke. Yes, please, Jyoti ji, go ahead. Yeah. So the doctor asked, do you smoke? He said, no. Okay. Do you drink? He said, no. Do you womanize? No. So doctor said, what will you do then? Why do you want to live? Exactly. Why you are here then? In the first one. Very nice, very nice. So now continuing to this health session, health session, Miss Apura will say something about a story about some health issues. Go ahead, Miss Apurva. Okay, so as Brahmam sir, told two, three stories. So I also took the courage. But अब मैं nervous हो गई हूँ थोड़ी सी. What do you mean? If Brahman san can say, you can say also? नहीं, ब्रह्मम सर ने मोटिवेट किया मुझको कि स्टोरी बोली जा सकती है एंड RYB फैमिली अप्रिशिएट करेगी, बट मैं अभी से अपॉलॉजी मांगती हूँ क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी नर्वस नाउ. So I'll try my best to tell the story so that you can enjoy, and what lesson I want you to get from it, you will get that. Okay, so this story is about a girl. So you can take her as my patient or my friend, whatever. So am I audible to all now? Yes, yes. Okay. Very loud and clear. Loud and clear. So actually I'm telling the backdrop of the story. फिर हम fast forward करके अभी current state पे आ जाएंगे उसके. तो when she got married, her weight was 47 kg. It is her weight loss story, so I'm sharing it with you. So her weight was 47 kg, and all her life she was very lean. So weight gain is just like a dream for her. Okay, so whatever she eat, she didn't, gain weight. So all her life she was like under 50 kg. I mean, so even when she got pregnant, her weight didn't goes up. Okay, so but after lockdown, जो बाकी सब लोगों के साथ हुआ उसके साथ भी होना स्टार्ट हुआ. एंगर इश्यूज हुए, बहुत सारी चीजें हुई, डिप्रेशन आया. तो after that, what happened in October 2020, she lost her father. तो after that फैमिली सब वो गो थ्रू कर रहे थे उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सडनली हो गया. तो दे वर ऑल लाइक कि हाँ ठीक है, हम ठीक हैं, सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे. एंड शी वाज लाइक कि ओके आई एम फाइन. बहुत ज्यादा रोई नहीं वो, एंड शी वाज वेरी स्टेबल. बाहर से शी लुक्ड स्टेबल. ओके, एंड सडनली शी स्टार्टेड गेनिंग वेट. So she gave birth to a kid in 2018 और लॉकडाउन ये 2020 में लगा. So it was like okay, post pregnancy weight है and all these things. तो she was okay. और वैसे भी लॉकडाउन में हम लोग इतना बाहर जा नहीं रहे थे, हेल्थ या हम लोग अपना वेट चेक नहीं कर पा रहे थे, तो it was okay for her. Okay, तो अक्टूबर में ये सब हुआ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, when they started talking on the WhatsApp call with her friends or with her, relatives.
सो everybody starts telling कि तू मोटी होती जा रही है, क्योंकि सबने उसे बहुत दुबला पतला देखा था, बहुत ही सूखी लकड़ी जैसे। कॉलेज टाइम में भी उसको स्कूल स्टूडेंट जैसे देखते थे। तो तू मोटी होती जा रही है, अब अच्छी लग रही है, बट इससे ज्यादा वेट मत करना, इससे ज्यादा वेट मत करना। तो ऐसी चीजें चलती रही मार्च तक। बट द प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन ऑल हर क्लोथ्स आर आउट। ओके, अब कोई भी कपड़ा उसको आना बंद हो गया। तो शी स्टार्टेड शॉपिंग की चलो ठीक है शॉपिंग करते हैं। तो मीडियम साइज से थोड़ा उसने L साइज ले लिए कपड़े, बट दैट ऑल्सो वोंट फिट। तो शी वेंट फॉर एक्सेल कि चलो ठीक है एक्सेल ले लेते हैं, डबल एक्सेल ले लेते हैं। तो देन शी फेल्ट कंफर्टेबल, बट स्टिल शी वाजंट एक्सेप्टिंग कि उसका वेट डबल एक्सेल तक चला गया, साइज डबल एक्सेल तक। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। शी वाज लाइक कि नहीं मेरा वेट तो ठीक है, बट मुझे क्योंकि ढीले कपड़े आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो ठीक है ढीले कपड़े हैं। सो एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है, तभी आप प्रॉब्लम का आप जब सोचेंगे कि प्रॉब्लम है तभी आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं उस चीज का। सो देन वन डे शी गॉट इल, या उसकी बेटी भी, मतलब जैसे बच्चा छोटा रहता है तो उनको शॉर्ट्स लगते हैं। तो शी वेंट टू अ डॉक्टर एंड देन शी चेक द वेट। तो इट वाज 63 kg। so she was like the machine was wrong. okay, so after that she started okay अब तो कुछ करते हैं, लॉकडाउन वगैरह सब ओपन हो गया है मार्च में, अप्रैल मई में। तो शी स्टार्ट कुछ डाइट करते हैं जो आफ्टर मदर, जो मतलब बच्चों से थोड़ा फ्री हो जाते हैं 2-3 साल के बाद, वो सभी करते ही हैं ताकि चलो कुछ डाइट स्टार्ट करते हैं, वॉक स्टार्ट करते हैं, कुछ जिमिंग स्टार्ट करते हैं। सो शी स्टार्टेड एवरीथिंग, बट कुछ चीजें होती थी फिर थोड़े दिन बाद छूट जाती थी। देन शी केम टू यू नो, फिर उसने एक कोर्स किया NLP का, यूं ही मतलब टाइम पास के लिए। तो देयर शी लर्न कि ओके यू कैन, मतलब दिस इज जस्ट अ चुटकी का काम रहता है, अगर आपने एक बार सोच लिया तो इट्स ओके। वो कोर्स खत्म हुआ, उसका मोटिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। फिर देन ही इज लुकिंग फॉर अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। तो उसने डाइटिशियन एक देखा, तो डाइटिशियन का कोर्स ही कर लिया। ओके, so this is my story actually. तो ऐसे मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन गई। बट देन अगेन व्हेन आई केम बैक पुणे, सो आई चेक माय वेट ऑन 11 अगस्त। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरी बेटी गिर गई थी, तो उसके चेकअप के लिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। तो ऑन दैट डे माय वेट वाज 69.3 kg। ठीक है, स्टिल आई फेल्ट कि गलत है मशीन। ओके, सो आफ्टर 4-5 days हम रीचेकअप के लिए जब जाते हैं तो शी अगेन चेक द वेट। उस टाइम पे 3-4 लोगों ने और चेक किया, तो शी वाज थिंकिंग कि सही है कि नहीं है। तो उसके हस्बैंड का सही आया, बच्चे का, मतलब मैंने चेक किया, माय वेट वाज 69.7। within 5 days I gained half kg. Okay, so that was the thing. And न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर लिया था तो पता था कि क्या करना है, बट वो फॉलो नहीं हो पा रहा था। देन आई जॉइंड RYB इन September. ओके, तो क्या हुआ कि RYB भी मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि व्हेन आई जॉइन न्यूट्रिशनिस्ट कोर्स, मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी बेटी को वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो आई गेव अप कि अब मैं कुछ करूंगी ही नहीं लाइफ में, आई विल बी होम मेकर। ठीक है, बट देन आई जॉइंड RYB क्योंकि वो 7 to 8 AM ही रहता है। I joined RYB, then I got motivated. I applied all those things because session 6:15 पे 6:30 पे सेशन होता था, विंस एंड चैलेंजेस था। तो आई गॉट अप एट 6:15 क्योंकि ब्रह्मम सर फोर्स करते थे कि कुछ आप बोलिए कैमरे पे आके। तो यू आर सेइंग यू आर न्यूट्रिशनिस्ट, यस, एंड कैमरे पे आप मोटे ताजे दिख रहे हैं, यू आर नॉट यू नो एक्यूरेट। तो
I started losing weight because of RYB, क्योंकि मुझे कैमरा फेस करना रहता था और मुझे टिप्स देनी रहती थी लोगों को कि हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ. एंड थोड़ा थोड़ा स्टिल आई रिमेम्बर जब कार्तिक सर बोलते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट. Sorry for that disturbance. So consistency can beat talent. So today I can say I lost 12 kg and my weight is less than 58 kg. So this is my journey. एंड एक्सेप्टेंस करना बहुत टफ रहता है और आपको पता भी नहीं चलता है कहाँ से कब चीजें स्टार्ट हो गई. बट जब आप मतलब एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करते हो और लोग आपको कंटिन्यू मोटिवेट करते हैं तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल. सो दिस इज माय जर्नी. सो जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि एकदम से डाइट के पीछे मत भागे कि डाइट प्लान, क्योंकि ये सब कर चुकी थी मैं. ओके, एंड ऑल माय होल लाइफ आई वाज वेरी लीन. ओके, तो मुझे ऐसा लगा चुटकियों का काम है, 2-3 महीने में मैं वापस वैसे ही हो जाऊंगी जैसे मैं पहले थी. बट आपका माइंड सेट, जैसे अभी सर ने कहा इस सेशन के पहले जिन सर ने बोला कि माइंड सेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. तो अगर आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, राइट, देन यू कैन अचीव फिजिकली एज वेल. So that's it from my side. Sorry अगर मैंने बोर किया हो तो. Thank you very much Purva ji. नहीं आपने तो इसलिए बोर नहीं किया है. It's your platform and nice to have your opinion. Yes, Neha ji, who is next now? Okay, all right. Sir, I want to say something. Yeah, Dr. Tanya wants to comment something. See, देखो, I have worked with GLCC. I have seen how this industry works. See, weight is becoming a big issue, and it is being used positively and negative also. It is the cause of lifestyle diseases. उसमें गलत चीजें भी हैं, ठीक भी हो रही हैं. इस चीज को कैप्चर करके फार्मा कंपनीज आर आल्सो डूइंग प्रॉफिट, व्हिच आई वोंट कमेंट हियर. उसके बाद ये है कि हाउ यू फील इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड जिसे कहते हैं ना, सिचुएशंस होते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब आप पे पड़ती है ना, आप अपने आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं. सो नेवर बी, आई आल्सो मे बी आरवाईबी के थ्रू बहुत कुछ सीखा है मैंने भी. आई वाज अ वेरी, क्या बोलूं, संजय सर जानते हैं, वेरी लो प्रोफाइल एंड वेरी, जैसे सब में से पर्सन ने मुझे पूछता क्या नहीं आप करो, आप कर सकते हो. सो टुडे आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माय वेबसाइट. अभी जो हमारी वेबसाइट के फेस ऑफ द वो है इवेंट, वो आएंगे. सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड व्हाट इज मंत्रा इज कि जियो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. 4 दिन की जिंदगी जियो, बादशाह की जियो, कुत्ते की जिंदगी मत जियो. जितनी भी जिंदगी है मस्ती से जियो. सो अभी आने वाले ऑन हिज वे. सो आई विल वेट फॉर हिम एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू यू ऑल. सो आई हैव लर्नड टू लिव विद हिम. So live life, okay? Okay, please carry on. Thanks a lot. Thank you, Dr. Tanya. Thank you very much. Wonderful. That was amazing, Dr. Tanya. And yes, right now coming before us is somebody who is going to mesmerize you with a song. Yes, it's time for a song. Let's call on Fazalji. Fazalji, are you here? Yes, you are. I can't hear you properly. Is it audible now? Yes, now you are audible. So I'll be singing a song. Just from camera. Okay, आपका camera है. Right. Better. So, हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है. तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है. ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान है.
तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बानी है, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है तू उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान है, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान है। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है ये तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए उस ज़मीं पर निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान है, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है। Thank you all. Thank you. Well, very well, sung. Very well, sung. You have got a very good voice, my dear friend. And welcome to RYB. Thank you. Thank you very much. तो शहीदों के बारे में, आज शहीदों का भी वैसे दिन है, लेकिन शहीदों के लिए भी हम लोग कुछ दो लाइन कहना चाहूंगा। प्यार ने खूब कहा है कि फना होने की इजाजत नहीं ली जाती। फना मीन्स वैनिश होने की, फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये मोहब्बत वतन से है जनाब, इसके लिए किसी की इजाजत नहीं ली जाती। जिनमें जज्बा होता है वो खुद आगे आते हैं, वतन के लिए काम आते हैं। सर, आज जो कुछ भी यहाँ पर हैं उन वॉरियर्स की वजह से हैं। तो अगेन सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, जो भी अनसंग हीरोज हैं, आज हैं नहीं हैं, जहां भी हैं, उन सबको सलाम। वेल, लेट्स मूव नाउ टू अनदर पार्टिसिपेंट, हमारी अपनी हेल्पफुल हेमा। ऑल्दो शी इज नॉट फाइन, शी इज सिक, बट शी हैज अग्रीड टू पार्टिसिपेट इन दिस alumni मीट। सो हेमा जी, क्या सुनाएंगे आज आप? देश के लिए, देश का सॉन्ग। मेरा आवाज थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। प्लीज प्लीज। आज हमारा गणतंत्र का दिवस है, इसलिए मैं हिंदी वाला देश के प्रति एक गाना गाऊंगी। अगर आवाज, माफी चाहता हूँ अगर बीच में आवाज कुछ ये हो गया तो। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? सुनाई दे रहा है, आप गाइए प्लीज जी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश बाजा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा
चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में ही एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि हेर प्यारी। कोयल की कोक न्यारी, पपी है कि तेर प्यारी। गाता रहा रहा बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में यूं ही जब सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जय भारत माता की जय। हिंदुस्तान। Very nice, Hema ji. Despite जय 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 माता भारत माता की। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। हमारी ब्यूटीफुल है माँ, ब्यूटीफुल। ललिता जी भी हैं। ललिता जी, आर यू देयर? हाँ जी, मैं आपका सुन रही हूँ, शुरू से प्रोग्राम सुन रही हूँ। वेरी नाइस। आज आप पार्टिसिपेट करेंगे कुछ? आपकी मेस्मराइजिंग आवाज में सुनना चाहेंगे हम कुछ। विजय सर नमस्ते, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। ललिता जी, आप पहले फर्स्ट मीट में आपने गाया था, नमस्ते उसके बाद ललिता आपने जी। गाना बंद कर दिया। नहीं, मैं गा तो रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे तरफ ज्यादा चली गई हूँ ना, जरा भगवान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, तो मैं इस ग्रुप को थोड़ा मिस करती हूँ। इसीलिए मैं 26 जनवरी की वेट कर रही थी कि हम भाई तो आपको मिस कर रहे हैं। We were missing you. Are you going to sing something tonight? ठीक है, मैं लास्ट में थोड़ा सा 2 लाइन बोलूंगी, जरूर बोलना चाहूंगी। ठीक है, अभी अभी ठीक है, वेरी गुड। अभी हेमा जी ने जो गाया कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, जो सभी अनेकता में वेशभूषा से एक हैं, उसी पे किसी शायर ने खूब कहा है, खूब बहती है अमन की गंगा, खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ नफरत, मत फैलाओ नफरत, देश में रहने दो, लाल हरे में, लाल हरे में मत बांटो तो, हर घर की छत पर हो एक तिरंगा, बस यही रहने दो। तो हम सब एक हैं, चाहे किसी भी मजहब से, किसी भाषा से, किसी वेशभूषा से, हम सब, हमारी पहचान है हिंदुस्तानी। न पूछो हमसे कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो हमसे कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान सिर्फ यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो प्राउड टू बी एन इंडियन। नाउ नेक्स्ट इज न्यू पार्टिसिपेंट, अपने नेहा जी के बेटे मिस्टर निहित, मास्टर निहित। ही इज 7 years old and he is going to perform a dance. निहित, are you there? सर आप स्पॉटलाइट कर दीजिए, निहित प्रसाद नाम से है। Okay. They already spotlighted this. Okay, please. Okay. Neet, are you ready? साउंड नहीं आ रहा, अभी ऑडियो नहीं आ रहा।
नेहा जी ऑडियो नहीं आ रहा है. Yes, now yes. All right. Very good, Nehat Prasad. Very good. Very nice. Congratulations. Neha ji, congratulations. Yeah, very good dancing. Yeah, Neha madam, very nicely. Dance, he was smiling and dancing. That is a Yes, plus yes. point of answer. Yes, yes. I just made Aaj, him aaj, happy in the other room. So yes, Vasudev sir. anybody else? आज हमारे ग्रुप में अभी नेहा जी भी हो क्या नाम से सबा कौसर जी भी आई हैं. She is a good शायरा. I heard her in a session. Sabha ji, are you there? Sabha Kausar, she writes शायरी. How did you know that? Sabha ji, I have attended one session of Captain Sanjay sir with you. Passive income wala. हाँ, पैसिव इनकम में Passive आपने income. Okay, तो okay. आप तो अगर अपना टैलेंट दिखाइए ना, हमको भी ऐसे शायरी के पैसे नहीं देंगे आपको, हम तो सुना दीजिए हमको. फिलहाल अभी कोई जी मुझे 5 मिनट दो, मैं आपको करती हूँ. 5 मिनट दें, ठीक है. मीनवाइल हाँ. ललिता जी, Meanwhile, हाँ मैं. आर यू रेडी? ललिता मैम, or anybody else? ललिता जी, you are mute. You unmute yourself. मैंने कहा मैं कैमरा सेट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा हो मुझसे. रहा है, बिल्कुल कैमरा सेट आपका बिल्कुल परफेक्ट है. We can see you perfectly. Yeah. चलिए मैं कोशिश करती हूँ. वैसे तो मेरा भी गला बहुत खराब है. दिल्ली का ठंडी आपको झपट लिया है मैडम. दिल्ली का ठंड बहुत है और मुझे पीछे गला खराब रहा. 2-3 दिन मुझे फीवर भी था. लेकिन 26 जनवरी का वो है, हमारा रिपब्लिक डे है. एज नेहा सेट कि हमें सब लोगों को अपने पुराने वादों को याद करना चाहिए सबको. और देश हमारा बहुत अच्छा है. अगर आप लोग सब जानते ही हैं कि पुराने जमाने में तो इसको सोने की चिड़िया हम लोग कहते थे कि इतना गोल्ड था हमारे यहाँ कि बहुत ही ज्यादा था. सब लोग लेके चले गए हैं. आज भी बहुत गोल्ड है लेकिन वो पॉलिटिशियंस की तिजोरियों में है. जो भी बहुत है बस मैं वो बोलना नहीं चाह रही थी. है बहुत कुछ हमारे यहाँ, आज भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि हमें मिलता नहीं है. दैट इज ट्रू. वो सारे लोग बाहर ले लेके भाग गए हैं. बहुत कुछ चला गया हमारे यहाँ से अभी भी. और भले ही एज मेरी 60 साल की हो गई है लेकिन मैं अभी भी थोड़ा रोमांटिक मूड में रहती हूँ और अच्छे अच्छे गाने गाती रहती हूँ. Let me tell you, I have just turned 60 last month. So I added great. I just added an N. So I'm 16. So don't. सब सोचने पर डिपेंड तो करता है, जैसे जी, बोलते जी. हैं सब लोग ना. लेकिन क्या है कि एज इज ऑल्सो नॉट ओनली नंबर. थोड़ा फर्क तो पड़ता है बॉडी में. It's just a number, nothing else. It's just a number. चलिए मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा. ये वीर ज़ारा पिक्चर आप लोगों ने देखी हुई होगी, शायद कई लोगों ने देखी हुई होगी. जी, जी. तो
तो मुझे नहीं पता कार्तिक जी ने और विजय सर ने कितना देखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा पंजाबी के शब्द हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इसमें है अंबर हेठा। अंबर बोलते हैं आसमान को, और हेठा मीन्स नीचे, कि अंबर के नीचे, आसमान के नीचे धरती है हमारी, और यहाँ पर बहुत सारी ऋतुएं आती हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, और हमारा देश बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है हमारा देश। तो इसमें मतलब मैं बोलूंगी किन्ना सोना, सोना मीन्स बहुत, इट्स रियली ब्यूटीफुल, आवर कंट्री इज रियली ब्यूटीफुल। तो थोड़ा सा 2 लाइन शुरू की पंजाबी की हैं। गला खराब है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। ओ अंबर हेठा धरती वसदी, ऐथे हर रुत हसदी हो, मतलब हर ऋतु यहाँ पर हंसती है। ऐथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। Thank you so much. I love my country. Salute to everybody. Thank you so much. वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस। सर आप म्यूट में हैं, वासुदेव सर आप म्यूट में सॉरी हैं। सॉरी, बहुत बढ़िया गाया ललिता जी आपने। गला खराब होने के बावजूद इतना 30 सुरीला, सेकेंड वाला रिपीट कीजिए, रिकैप इतना कीजिए। सुरीला, इतना सुरीला। हेलो, 30 सेकेंड वाला दोबारा रिकैप कीजिए, हम नहीं सुने कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ गला खराब होने के बावजूद इन्होंने इतना बढ़िया गाया है, तो इनको सैल्यूट है। बहुत बढ़िया, वेरी Thank नाइस, you. Thank you. वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी वेल सॉन्ग, वेरी वेल सॉन्ग, एंड थैंक्स अगली फॉर बार मैं पार्टिसिपेशन। पूरी प्रिपरेशन से आऊंगी और अच्छे अगली से। बार आपको गाना है, डेफिनेटली Sure. गाना है आपको। और सर अगर अभी उनका नाम लिख लीजिए लिस्ट में, अभी से आपका अगली नाम बार लिख के देते लिए। हैं। हाँ। Anybody else interested to say something? शायरी बची है। शायरी कौसर, हाँ सबा कौसर जी, आर यू देयर? डॉक्टर तानिया भी बोल रही थी किसी से मिलाएंगी, तानिया जी आ हाँ, गए? बट ही इज नॉट अवेलेबल, अभी तक आया नहीं वो। चलिए मैं सुनाता हूँ शेर। Meanwhile, हाँ जी, मैं वेट ही कर रही हूँ, मैं भी उनके जैसे ही आते हैं आपको मिलवाते हूँ। रास्ते में है, ट्रैफिक में फंसे, मैं वेट ही कर रही हूँ। चलिए meanwhile, I'm going to say tell you a शेर। किसी शायर ने लिखा है, छूट गया जब कभी ख्याल तेरा, छूट गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। छूट गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, और मेरा घर देर तक महकता रहा। तो समथिंग रोमांटिक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। सबाजी, आर यू रेडी नाउ? सबाजी आप हैं? अभी कैमरा पे आए थे। सीजन 4। सबाजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, I was at phone. Sorry. ओके। मैम आपका टीवी थोड़ा म्यूट कर दीजिए ताकि आपका शायरी खूब सुनाई दे हमें। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है।
टीवी मैंने कोई थोड़ा तैयारी नहीं की थी। टीवी तो आवाज आ रही शायरी की कभी तैयारी नहीं होती मैडम, ऐसे आ अब तो खुद जाए। शायरा है, अब तो खुद शायरा है। हम तो औरों के शेर सुनाते हैं। सबर कोई कमजोरी नहीं होती, सबर कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। वाह ओके, अब ये मैं RYB पे लिखी हूँ। जी। यूं ही रिश्ते बनकर चले हम, न जाने किस मोड़ पर दूसरा रास्ता मिल गया। जब मिले हम RYB के लोगों से, तो दिल की आवाज बोली, ये रिश्ते ही है जो हजार नहीं हो सकते। कहीं न मिले तुम तो हम टूट जाते, कहीं न मिलते तुम तो हम टूट जाते। ये अधूरी है, मैं पूरी नहीं कर रही हूँ। I'm No, sorry for this one. no, it's okay. हाँ? Please go ahead. नहीं, ये पूरी नहीं करी हूँ, बस इतना ही लिखी हूँ अभी मैंने। ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है, अगले अगले बहुत खूब। अगली बार आप अच्छी गजल लिख के लाइएगा और तरन्नुम में गाइएगा। जी 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 जी, पक्का। प्लीज। मजा। Thank you very much for giving me chance. No, welcome. So anybody else? नेहा जी, कोई और किसी ने हाथ उठाया है? जी सर, एक है जी, अच्छा। और वो है वासुदेव जी खुद, क्योंकि अगर उनका गाना नहीं हुआ तो भाई कैसे हम खत्म करें, राइट? तो एक सर आपका गाना बनता है, फिर कार्तिक सर आल्सो हैड टू आई गेस से समथिंग। वासुदेव जी आपका वो लास्ट में होना चाहिए, इसीलिए हम पहले अनाउंस कर देंगे। बेस्ट थिंग्स विल ऑलवेज बी लास्ट। आज मिस्टर कार्तिक, आपकी डॉटर नहीं आई? मिस्टर कार्तिक, योर डॉटर इज नॉट हियर। कैमरा, if I switch on the camera, she will be up. Okay, just कैमरा ऑफ कर लीजिए, we can hear her. कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ करके उनका सुनाइए ना, वो अच्छा करती है, गाना गाती है। हाँ, अच्छा गाती है। I don't know whether she'll come or not, so I'll check. Janvi? जामन हमको देख रही है ना, हम लोग कैमरा ऑफ में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। Maybe sir is trying to get her. Yeah. Okay. Big exercise for Karthik. So it will take us a while actually. No issues. So I think I'll do a quick announcement. I'll not take much of the time because it's a holiday mood and we want to be there actually. So, and special thanks to all of you and Happy New Year. Last time also I told, but again this time with the Republic Day coming in, it's an amazing thing to all of us. As many of you know that RYB 15 will be our last live session, and starting with RYB 16, it's going to be completely on the recorded mode. And yeah, so we are starting our procrastination killer. We'll continue to have our procrastination killer, which will be a live sessions. And as of now, the frequency will be once in 2 weeks. So we are starting from this Monday morning, 7 to 8. Okay. So those of you who wants to go and sponsor or gift this one to people, please go ahead and do it. You can reach out to Hema for any of those, the schedule or how you can actually go ahead and give them. So that is the main update from our side. And since Chauhanji is not feeling well and he's still recovering, so there may be a chance that the sessions that will be planned by Chauhanji would actually get impacted on the days which was scheduled. So what we'll do is we'll do some alternative arrangements, like today we're supposed to be having the RYB advanced sessions. Because of Republic Day, we couldn't have it. So you're planning to have this on Sunday morning at 10 o'clock. So all of you can actually look at this. Just give us that flexibility because a lot of shuffling around happening because everybody has become busy. And if one person is not coming, so we'll have on some other day. Don't worry, the sessions will not be missed. It's just that we request all of you to have some patience. And yeah, so in that way, all of you will get the best of this. Okay. So that's the whole thing. So let's hope, everybody will get recovered. And there are a lot of participants also who are there, who are actually going through a challenge of the health. We wish them all the best. Don't worry. And if anything is not happening in your favor, especially when it comes to the health condition, so RYB is a great family for all of you to get the support whenever it comes to the health thing. You have to ask, okay? Only crying baby gets the milk. So ask for the help. There are a lot of health experts who are here. They can help you out. I think that's it. So any thing, Hema, you want to share any other announcements?
Is there any introduction session for procrastination killer? So Monday, is it there, sir? there's no introduction, but we are directly getting started on the Monday morning actually. No, last how we did on webinar kind of a thing. Is it any on Sunday, sir? We don't have a separate one because what we are actually seeing here is see, there is a the Monday is what we are starting this session. What I'm seeing is an introduction of a procrastination is also a challenge because not many people are also joining. So that is what I'm saying. We'll directly get started with the session because for 199 again going with an introduction session and other stuff, it's going to be too much. Okay, so let them join the course directly, and they can come on first day if they want. Okay, rather than having an introduction session separately, let them join on the first day. If they don't like it, yeah, let them discontinue. That's absolutely okay. I would say that is better rather than having a separate introduction session. For 5 days only, we are charging 199. And again, one more introduction session, it's not going to help us actually. Sir, it is not like that. The way you are explaining that extra 2 hours in the morning, what change they will, bring to our life, that is a different level of understanding the procrastination killer. So I can create one video and give it to you, very short, Yeah. quick one. Yes. So you can Yes. circulate this because people nowadays also they don't have time. Even 2 hours also people are having a challenge to come and see. Okay? Yes. I understand. So we'll do that. You can ask them to come on day first. If they like, they can continue. Otherwise, that's okay. That's a better deal rather than having a separate session. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you. Okay. Anything, Hema? You have any other things to be announced? No, sir. Thank you. Okay, great. So over to you, Vasudev ji. And one request, what we can do is when we are having this special session once a month, right? Let us make a list of all the people who have got the birthdays and the anniversaries, and we'll play one common song to all of them. So it will be really good, Very good way idea. of celebrate other than. Very good idea, sir. Very good idea, sir. Okay, and let's. Everybody should tell Hima ji the birthday or anniversary so she can have a record. Yeah. So let's play that Sanskrit song. So Desi song. So rather than saying happy Only birthday. date na, not year na. Okay, sir. Over to you, Vasudev ji. I will not take much of the time. Over to you. Bye. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. तो चलिए मैं Good suggestion, Karthik. मेरे को जैसे मैंने अभी ललिता जी को बोला था I am 16, so I always sing the मस्ती वाला song, especially when I end the session. It should be end with the मस्ती ना. Please, sir. ठीक है, चलेगा? Alumni party के song के बिना कैसे होगा? पार्टी सॉन्ग, डांस वाला सॉन्ग. लेकिन सभी लोग एंजॉय कीजिएगा उसको. अगर आपको लगता है तो डांस भी कीजिएगा. Okay, I start now. Just a second, please. म्यूजिक बहुत कम है सर. La 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. Karthik sir dance. Karthik sir dance. Karthik sir dance. Come on, come on. दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे.
तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं, तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया कर जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तुमने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू। Amazing. Awesome. Beautiful, beautiful, beautiful. No words. Excellent, excellent, Super. Vasudev ji, excellent. अभी वो बोले मोटवानी जी माधुरी दीक्षित की भाषा में बोले सुपर से भी ऊपर। Yeah, extraordinary, extraordinary. Thank you, thank you, thank you. So kind of you. Super. And I'm happy that everybody was enjoying. Super se duper. Thank you, thank you, thank you, Shit sir. So with that note, Karthik sir, with Excellent, your permission, can we end the session now? Yes. Please, please. Okay, thank you very much once again. Very, very happy Republic Day, everybody. Happy Republic Day to all. Yeah. Thank you, thank you. Sagarika ji ko once again very happy birthday. Thank you. Thank Memorable you, day. guys. Good night. Good night. And also, Memorable day, One more memorable day. Vasudev ji. Thank you, happy Neha anniversary ji. to Thank you. Jyoti. Yeah, thank you, Himad ji. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Vasudev sir. Thank you. Thank you all. Thank you. Bye. Good night.